हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए गाइस, ये जो था ना बिल्कुल सही सलामत था। ये दिया था बड़ा वाला, लेकिन ये मुझसे ही मशीन पर से गिर के टूट गया। तो इसे मैंने ड्राई ही रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है। क्योंकि देखिए, ये जब गिर के टूटा ना तो ये पूरा नीचे तक दो पार्ट में चेंज हो गया। तो मुझे लगा सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसे ये नहीं वेट नहीं किया है। बाकी क्रंच करते टाइम पता चल जाएगा। तो मैं अभी जो है 2-3 दिन लगातार क्ले के ही आइटम लाऊंगी क्रंच करने की, क्योंकि क्ले के रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा ही है। तो चलिए देखते हैं, क्रंच स्टार्ट करते हैं। ओह गॉड, सॉफ्ट एंड सो अर्दी।
ये थोड़ा ग्रीटी है गाइस, सॉफ्ट है बट ग्रीटी है। इसको ट्राई करता हूँ। ये ठीक है।
तो हो गया गाइस क्रंच होके, और क्रंच करके बहुत मज़ा आया। ये बिल्कुल ही ड्राई था, देख सकते हैं आप, डस्ट पूरा हाथ उस सब पे डस्ट लगा हुआ है। एक ग्रीटी गिलास निकल गया, उसको मैंने हटा दिया, लेकिन दिया और एक गिलास एक नंबर, सो सॉफ्ट एंड बिल्कुल बिल्कुल भी ग्रीटी नहीं। बहुत मज़ा आया ओवरऑल क्रंच करके। और ये मेरे सारे क्ले लवर बहनों के लिए है। तो आप लोगों को क्रंच कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं बैक टू बैक सिर्फ क्ले के क्रंच लाऊंगी गाइस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।